gifts for those students who will ask very good question. I'm saying very good question. And why I'm enticing you with that particular thing now, because if I go 10 years back, students used to have a lot of craze and they used to ask a lot of questions. I don't know what has happened for the last 4-5 years. The moment somebody says, and somebody is very good in telling something, informing something, students don't tend to ask the question. I don't know what is the reason for that. So we people also started enticing you guys, and we started saying, okay, can you grill me? Can you ask me a question which is the question coming from IITians? The question should come from you people, right? Something which is very, very thought-provoking, intelligent, and in-depth question, not any question. Because when I'm standing here in your building, I'm fully aware that I'm standing in between the brains. And what I'm gonna tell you all now, you'll be very attentively listen to that. And at the end, the kind of question you will ask will make me really happy that yes, this is called a question. So for that, I normally play this kind of game with the students who sit in my presentation. And number two, I only keep my presentation for half an hour, 45 minutes, summarizing the things, most important things, and then open it up for the discussion. By this present discussion, because I was here for academic profiling of IIT Mandi, that means, what is IIT Mandi? How does the outside world know? Either they know from you or they know from professors, but now we are here who keep on going to different universities in India and world and then tell comparative analysis where IIT Mandi stands. I'm doing parallelly the profiling, such profiling I've done for IIT Gandhinagar, doing Hyderabad and all. So that is how, comparative analysis. What kind of research is going on? बच्चे कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, जब 6 बजे प्रेजेंटेशन रखा था तो कितने आए थे, you understand that? All these things matter. That is what I'm gonna do, and that is what I'm gonna tell everyone. And this is live session. That means many people must be watching this. So kind of presentation here goes from my side, and the kind of question you ask is gonna be very, very relevant. Now this my presentation is related to admissions in the foreign universities. I start my sentence with this: never in the history has this moment come when getting the opportunities, best opportunities, was so easy. Never in the history, and I'm going to prove it. Never in the history in the past was such moment when getting certain opportunities was so easy. Thanks to COVID. COVID has given you that chance. My presentation in IIT Ropar was some 2 weeks back, where I gave the presentation on this very theme. And the theme was like, never in the history was getting into entrepreneurship was so easy. Never in the history was getting into core branches of engineering was so easy. And never in the history getting into top global universities, top 20 I'm talking about in this campus, was so easy. But this presentation is related to the third part. I'm not talking about the entrepreneurship and core domains. I'm talking about the top 20 universities. Second statement which I normally give when I go to IIT is that IITians deserve to be in top 20 universities. That is very, very simple. That is very straight, I think. And if you're not getting into that top 20, you are degrading yourself. Because from the IIT system, you should go to the higher level. And I strongly do not believe in QS system. I do not believe in QS ranking. I tell you, there is a big debate. Why IITs are not among top 200 QS ranking? I started asking this question to all the directors, all the professors, everyone, India, abroad, everyone. Why IITs are not among top 200? Okay, so why that is so? I started asking them this question. I got a lot of inputs. On the basis of that input, let me share something with you. And I'm very sure you people will agree with me that QS ranking is actually not that authentic for us. We may not always stick to that. I give a small example. When I come to IIT Mandi, I met with the students. The very first day we started was with Tamil function. There was some gathering of students from Tamil. The next day it was a Bengal festival. It was Himachal day. I could meet people from different states. I met them. That means I can fully confidently I can say IIT Mandi mein all over states India students are there. But when you go to typically some university in US, which is a top 200 university in the world,
QS ranking. You find students from all over the world: Japan, China, Korea, Taiwan, Asia, Europe, everywhere. Why ordinary university in US get students from all over the world? Even our best universities, we don't get it. Reason? Because we are in India. It's a developing country. That is the true. IIT is a very good in infrastructure. When I'm saying this, I'm in live. Anybody can correct me if I'm wrong. We have the best infrastructure. Research labs are same. We have the best brain. जो पढ़ा रहा है वो भी बेस्ट है, जो पढ़ रहा है वो भी बेस्ट है. Brain. Whosoever my student goes abroad, he tells me कि sir, we put more effort in India. I started my academic profiling intentionally on Saturday. I reached on Friday and intentionally we started it on Saturday, and I was surprised to see professors were sitting in the lab, students were sitting in the lab. Saturday and Sunday were the most hectic for me. People were working. Typically, university in the US, you can't think of that. They don't do that. We are putting more effort, we are more brain, we have same infrastructure. Then why in QS ranking हम कम है? उसका reasons, उनमें से एक reason मैंने आपको बताया. I can elaborate on that. So that means what I was saying, that if you guys want to go next level, BTech to MS or MS to PhD, you should target among top 20 only. And if you don't do that, तो आप degrade हो गए हो. That you assume in your mind, and then you proceed forward. Don't get happy. You got some college of 100 rank or something. Not get happy. Don't get happy that okay, I got into a college in United States of America. We are not going there for United States of America. We are going there for our domain. That is what we are interested in. मेरे को अपनी domain के लिए जाना है. Suppose I like additive manufacturing. So I want to do some work in additive manufacturing. I did here, I got some idea of the manufacturing engineering, and now I want to go for that. So that exactly is the purpose, and that for that reason I'm going there. And if I'm going for that reason, I should go to the best. That is the basic philosophy at which we started, that we should top 20 universities. Now I told you in the beginning, never in the history we got this opportunity. और कुछ ऐसा हुआ पिछले कुछ सालों में, and I think many of you are the product of that. Something happened that 2020 March, you people are knowing what happened. Entire India, academic institutes, all were closed down. Nothing was working, everything was closed down because of the COVID pandemic. We lost many people. We don't have very good memories of that. But that gave the immense opportunities to us. And this also we learn from the history, that whenever in the world some lowest phase comes in the life of humanity, in the life of human being, some lowest phase comes, after that there is a growth trajectory starts. After that growth phase starts. Recession आया था 1930s में, उसके बाद जितने लोग ग्रो किए, it was very easy and cakewalk for them. Same thing happened after COVID also. COVID का impact क्या हुआ? My topic today is the foreign admissions. So COVID का impact क्या हुआ? COVID का impact ये हुआ कि we could not go abroad. I mean, we were locked down, restrictions were imposed. Majority of the universities in US are, being run by students from Asia. You talk in China, India. China, India was the most affected. जा ही नहीं पाए वो लोग. They could not go there. So when they could not go there, the universities में admission was not there. And it affected not only ordinary colleges, it affected all the colleges. You name top 20 universities and it got affected. तो उनके पास students नहीं थे. Industries were locked down. Professors were not having projects. Professors are sitting idle. They're getting salaries, but they're sitting idle. They're not having project. Let us say, if they're not having projects, they're waiting for some day when things open up. We start doing the projects. Nutshell में, there is a big, basically, gap which came between the students in the campus and what was the expected strength of the students in the campus. So huge gap came, and then what happened? Slowly things started opening up. उसका रिपरकशन क्या हुआ? If I talk to exactly 2020 2021 में तो एडमिशन नहीं हुआ. I mean nobody was allowed to go US and all. 2021 के एंड में 2021 2022 में क्या हुआ? That slowly university started inviting people. It was not that they are inviting, you are not going. You are not going. You will not take that risk, because many students were sent back also, and some got caught also. And many of you know that US में situation और भी pathetic था. ये बाकी countries में situation और भी pathetic था. ऐसे time पे parents will not send you abroad when the devastation is world over. So 2021 2022 के बाद slowly things started opening up.
And universities desperately wanted students. You know what they did? They waived off the requirements, like GRE and all requirements are not there. They waived off those requirements. They said we don't need GRE. And in many places, even TOEFL and IELTS, which are actually visa requirement, even they were waived off. And I told you there was a lot of gap. Next year when admission season again started, they found that yes, students are, even now they are not coming. So till today when I am talking here, many universities in US have already waived off the GRE requirement. And even if those universities which have kept the GRE as a requirement, if I talk about the top universities, they are asking for very less GRE score. 310, if some many people of you are aware, 310 is no score. What we say is 320 is a good score, 310 is no score. तो ये जो top universities हैं, इनमें on average जो हमारे students अभी India से जा रहे हैं, they are getting this kind of score, 310 or 312. At this score, they are getting admission in the top universities. As I told you, never in the history. Second part of that, scholarship, we want scholarship. Indian students want good university, good scholarship, because we can't spend the money. We can't spend that much of money. There is a restriction. So Indian students want scholarship. Scholarship normally come from the university or it comes from the projects. Now, professors were, that time was, projects were not being done. Now, lot of projects popped up, lot of projects came to professor. Now, they desperately want students. So much so that sometime when we say, okay, this professor is requiring student with these credentials, the moment you mail, immediately professor mails you back, okay, can we have a meeting on Zoom or something like that, and we can fix up a meeting and we can go for that. So immediately they will say, okay, can you join it? Because they need people, to run the project, and you get scholarship from the project. That means COVID से क्या हुआ? COVID से 2 साल block लगा. उसके बाद universities wanted students and they waived off the GRE. I want students somehow. Okay, even if you don't have this, I want student. And scholarship they increased. Why they increased the scholarship? Because projects were there. They wanted people to join, and a lot of scholarships started popping up. Because 2 साल में वो कुछ भी नहीं हुआ. Now they want to desperately to run the industries. They wanted to run the projects, run the universities, and suddenly this started increasing. And hence we started getting lot of good scholarships. We also identified one more thing. Earlier, when you used to apply for top universities, then the requirement used to be like you will fill the application and you will fill these credentials, you will fill your cover letter and all these things. Now, another new thing we observed, you get a professor on the LinkedIn, you get connected to him, you say, I would like to work under your guidance, and simply tell him that you are working in this field and I also want to work in this field. The moment you do that, the response which students started getting was tremendously good. They started getting very good response. I mean, students started getting the this particular admissions only on the basis of the LinkedIn itself. That also started happening. That was a new development. And that is what in the beginning I told you, my entire address, the thumb line is like, never in the history you are getting such wonderful opportunities. That is true. Very big question comes, we have wonderful institutes in India. IITs are there, everything is there. We can go for higher education in India, abroad. My friend Hitesh is sitting here. We are doing wonderful work here. So, should we go abroad or not? I tell you, this decision is your very personal decision. Me, Hitesh, we stayed back. We thought to be here. We were all capable of going abroad, but we stayed back. This decision is your personal decision. My duty is only to tell you the pros and cons. That's it. You want to stay in India, you can take care of parents. Like I can take care of my old parents whenever they get some trouble. I reach them. That gives me satisfaction. When I'm an entrepreneur. When I'm generating jobs, I always believe that I'm creating jobs for my people. And GDP growth mein I'm contributing. Those kind of feelings. And I like my friends. So many friends I have here. I can talk to them. I can meet them. So that is one part of the story. Okay, you want to be in India? Enjoy. Good. Why somebody would like to go abroad? I tell you, somebody told me this. He told me that if you want to grow in life, in career, go as far away from your home as possible. And that is true. Because the moment you go as far away from your home as possible, you learn many things. You learn to adapt. You learn to take risks. You learn to meet with another people. You go away from your limitations, which can be emotional attachment with your people. There are so many reasons, behind this particular statement. You go away from your home, you grow it. Number 2, we need to learn from the world. We need to learn from them.
The moment we go out, we meet people from different part of the world. I'm in IIT Mandi, I'll be talking to Tamilian, I will be talking to Andhraite, I will be talking to Bengal people, I will be talking to Haryana, I will be talking to Punjab people. Okay, I'll learn from them, no doubt. But think of the next level of that. You're sitting in the lab, you're talking to Japanese, and then you learn how meticulous these guys are. For them, 6 p.m. means 6 p.m. It is not 6 p.m. and 5 minutes. They're so meticulous, so detailed actually. When we talk about some another community, we believe they are so passionate. They focus on their work. For them, standard operating procedure is so important. You learn from them, and then your personality starts transforming. So that means if I go abroad, what I get in return? Answer is, if I go abroad, I start getting these things. I start learning, and my personality start getting transformation. If you ask me honestly, sir, is there any course in the world, personality transformation course? Yes. Travel, go away from your home, meet different people, explore. That is the only way your personality transformation comes, nothing else. You cannot transform your personality sitting at one place and doing it, meeting with the people. अब्रॉड जाने से आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, दैट इज ट्रू, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दैट. एंड यू नो व्हाट, व्हेन वी गो अब्रॉड एंड इफ यू थिंक कि हमने इंडिया के लिए नहीं किया, हमने उस कंट्री के लिए किया, आई बेग टू डिफर. दैट मे बी ट्रू इफ आई गो टू दैट कंट्री एंड रनिंग माई बिजनेस इन पर्टिकुलर डोमेन, बट इफ आई एम academician, that statement is again not true. If I'm in a foreign country and if I'm academician, let us say I did something really good in research, I'm giving back to my country. Why? Because international journal mein your name gets reflected. Dr. Vijender names get reflected in international journal that is referred all over the world. Then obviously India's name go up. Last year I went to National University Singapore and Nanyang Technical University, small country in the vicinity of India, more closer to India than China. I went there. I was on some visit, a professional visit only. I went there. I met my students there. Then out of curiosity, that is what I'm doing. I'm going to corridors and seeing what professors are doing, what infrastructure is there. Because I keep on roaming. I've spent 10 years in IIT Delhi. I've spent years in the labs of DRDO. So out of curiosity, I wanted to see what labs they have, what they've got. I mean, National University Singapore में ऐसा क्या है जो मतलब हमारे IITs में नहीं है? Out of curiosity, I started exploring. Went from one lab to another lab, one lab to another lab. What I found was I could not find Indian. Though I was moving with my Indian student, I could not find Indian. I met Chinese, majority of Chinese professor. I could not help. I met one of the Chinese professor. I said, I'm from India and I'm coming to this university. I wanted to explore. So you have 2 minutes. I want to talk to you. How many students you have? These many students. What are the nationalities? Majority Chinese. I could not find Indian professor. I could not find Indian students. Very less. When I'm saying I could not find, if I hit 20 people, out of probability maybe 1 or 2. That does not define our population. We are as good as in population as Chinese are. We are English speaking country. So is the Singapore. We are very good in mathematics and physics. Better than them. So that means we are not represented actually in those universities. We are not represented there. So that simply means that in foreign universities, and I give you a task, you just out of these universities, you go to any of these universities. That is our target. I told you that as IIT, and if you are in this campus, either you go to top 20 or you don't go. Don't go to any university. Don't do that. So being IITian, then use people, if you open these websites of these universities, you will not find many Indians, but you will find in every department 40%, if not 50, Chinese professor. I'm not giving you statistics here to compare India and China. I'm saying China is as developing as we people are. They were not good in English speaking also. But what they do is, because professors are there, they maybe pull their students also. So if some of you join those universities at those levels, it is giving back to the country also. Because whenever I present, students sometimes ask, sir, you sometimes say that go abroad and pursue higher education. Is it not brain drain? I strongly don't believe that actually. I say in academics, it cannot be brain drain. If you give back home, if you give back to your country, and for the past couple of years, since this online and information technology revolution came, this entire world has become actually a global village. It has actually become a global village. And so it is not a brain drain. So yes, conclusion is explore करो, घर से दूर जाओ. आप में से जो लोग तमिलनाडु से आपके मंडी आए हैं, very good. I'm really fan of them.
I mean, you will learn a lot. I'm telling you honestly. But those from Himachal are in Himachal, they may not learn that much because they didn't meet, they didn't see other cultures. So वो कुछ ना कुछ loss है उनको. I strongly believe in that. Now I'm coming to another part, which I told you, there are some smart moves. Hard work, smart work, सबने सुना है. Smart work होता है when you see some opportunity and you see, okay, इससे ज़्यादा probability and then you hit that probability. Direct PhD is one of the wonderful opportunities in foreign universities. Direct PhD. MTech के बाद PhD, BTech के बाद PhD. Our BTech students don't use that. BTech people use that less. Majority PhD opportunities in US people explore after BTech. Professors want immediately after BTech so that you give consistency to a professor for 5 years. MTech guy joining PhD will start eating the head of professor after 3 years. BTech guy joining PhD will not bother the professor for next 5 years. So for 2 years I'll train you, and for the next 3 years you are asset for me. So that is called direct PhD option. Now, direct PhD admission is not difficult, it is in fact easier. Presently how Indians are going? They do BTech, apply abroad, don't talk to professor, don't hit him on LinkedIn, don't choose the best one for them, choose the university in US, California want to go, choose any university in California, just apply in the department, did not even talk to professor, see what is the fee structure, go take the loan from the bank and go there and give that money to the US. What is the smart work? Third year, final year of my BTech, I identify a professor. Okay, this is the university I want to go, this is the field in which I want to work. Identify the professor, got him on the LinkedIn, got connected with him, उसको LinkedIn पे पकड़ा and उसके साथ बात किया and उसको impress किया, उसका research work देखा, what work he is doing. Suppose I am to work with some professor, I need to see what he is working. I need to spend at least 2 days in what Professor Hitesh Shimali is doing in VLSI. And the moment I do something and drop a mail to him that you are working in this field and I have gone through your research papers, would you give me a chance? And if the professor gets convinced that you have gone through his research work and you are out of interest coming to him, believe me, your probability of getting response from that professor will be very, very high. That we are not doing. Second, okay, I want to go for PhD. The moment you go for PhD, you get scholarship. The moment you go for MS, you spend money. The moment you go for PhD, you get scholarship in return. And the scholarship as of now is 2,500 to 3,000. So a BTech guy going abroad, not spending single penny from his pocket, in fact getting $2,500, $3,000 in return during PhD. But the PhD is a long commitment, 5 years, I never decided about that. And here is a good thing. Foreign universities you get flexibility. The moment you complete 2 years, and if you want to land up in industries, and want to continue your PhD after some years, part-time or something, they give you MS, you can happily go to industries and complete your PhD later on. That means what you did. First you chose PhD, you got a visa for long duration, you got scholarship, you got good university, you did your work there, you got MS which otherwise you were aspiring for, now you went to industries and part-time you completed your PhD which will be valued very high in the industry. This is I call smart work. As for my statistics, majority of good opportunities in PhD are direct PhD. But not even 5% of the direct PhD opportunities are explored by Indians in foreign universities. You people don't do that. Why? Mental block. हमें PhD नहीं करना, हमें उस कोर्स में नहीं जाना. हायर एजुकेशन के साथ एक बहुत बड़ा मिथ अटैच्ड है, वो है कि हायर एजुकेशन मीन्स टीचिंग और समथिंग लाइक दैट. हायर एजुकेशन मीन्स लर्निंग ओनली, getting specialized. Our entire economy is getting towards specialization. Think of doctor, MBBS. You have eye problem, maybe you will not go to him. You want specialist. Every profession is heading towards specialization. So is engineering. So you are getting specialized in particular domain and you should do that. Then only you can grow in that particular domain, in that particular field. I want to tell something about master's students. I strongly believe the students who are doing masters, they have wonderful opportunity in their hand in the form of their MTech degree. Because after MTech to PhD, there is a scholarship, 100%, always. Because without scholarship, there is no PhD. Is there MS without scholarship? Yes. MS में you don't get 100% scholarship. Everybody knows that. आपको घर वालों से पैसे लेने पड़ेंगे. But after MTech, obviously there is a scholarship. No denying of the fact. Number two,
PhD is not a higher education course in Europe. It is advertised as a job. Notification ही वैसे आता है, advertised as a job. PhD is a job in European universities. It is not a higher education course. It is advertised as a job. And after 3 years, you are awarded degree and you can go there. If you do properly your masters, that means you get a good CGPA, you do really good project work, and if you learn certain skills which professors is requiring, then you can ensure a very good job for you abroad. I really don't like placement thing actually in the campuses. Placement is something which restricts your effort actually. Think of there is no placement in the college. Just imagine for 1 minute and ask yourself, will you not put a lot of effort to self-explore the things? Students will self-explore more things if placement cell is not created in the institute. IITs were not created for job seekers. When Nehru gave the first address to IIT, when first IIT was created, he said this: I'm not creating this institute for job seekers. Because tomorrow government may not fulfill the employment needs of the country. It is not. Kitni government jobs hain? You ask yourself. A majority of jobs will come from other sectors, private sectors. You need to create industries, you need to create the ventures. Who will create the ventures? Capable people like you. Do you do that? Do you think that? No. Job seeker, the placement comes, everybody lined up. I mean, I make a job chahiye. So you don't create the jobs. So IITs were not created for this. Uska hota kya hai? Students are so obsessed with the placement, they put entire their energy in the placements. Okay, done, placement you should get. ले लो, जो opportunity life में मिलती है उसको लो. Put more opportunities on the table. That is good. What stops you from exploring your own options? BTech level पे, MTech level पे और PhD level पे. I'm telling you honestly, and Hitesh was my friend when we did our doctorate also. He knows it. BTech level, MTech level, PhD level पे. मेरे को जो कॉलेज से मिला मैंने उसको कभी यूज नहीं किया. कॉलेज से प्लेसमेंट लिया मैंने. I did that. Because unless until you go to placement cell, how you will know कंपनी में तुम्हारी वैल्यू है भी कि नहीं. Somebody will even recruit you or not. How do you know your deficiencies? But then there was self exploration also. मैं अपना एग्जाम लिखूंगा, मैं अपने आप एक्सप्लोर करूंगा, मेरे टेबल पे ज्यादा ऑप्शंस होना चाहिए. That is what IITs are. That is what IITians are. You should have more options in your hand. Yesterday I was talking to some students in graduation. I mean, my team was talking to North Campus. What are your options? What do you want? Because that is also very important part of academic profiling of the institute. वहां के बीटेक, एमटेक, पीएचडी के बच्चों का साइक कैसा है, उनका विजन कैसा है, what they think about them, what they think about doing. And I came to know that majority are job focused. I'm telling this online. IIT Mandi में I interacted, many students we interacted. Majority want job, and that is reflected in today's gathering also. I mean, not many people are exploring the options. Same gathering in another institute of your relatives when I had in some another place, the gathering was huge, 500. That shows students are interested. I told the authorities that don't invite people by force and for snacks. No, those who are interested they should come. इंटरेस्ट होगा तभी तो आएगा. अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बोलना स्टार्ट करूंगा तो इस कमरे में कौन आएगा? वही जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है. तो मेरे को अगर पता लगाना है कि आईआईटी मंडी में कितने बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, इट्स वेरी सिंपल. I'm gonna take a lecture on entrepreneurship. Who sir wants to come? And that will tell, okay, these guys are interested. बनते हैं नहीं बनते बात की बात है. Interest तो हो. Think of 10 people lined up here. What is academic profiling? I say no. IIT Mandi में people don't want into entrepreneurship. And Nehru created IITs for entrepreneurs, not for job seekers. That means you need to self-explore. And believe me, I'm not criticizing it. I'm not criticizing you and your vision. I'm telling you certain things which my observation is, and I'm telling you something which you can do. I strongly believe एक स्टूडेंट अगर अपने कॉलेज से कैंपस में 15 लाख की नौकरी ले सकता है, उसको मिलती है 15 लाख का फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट, देन हिज कैपेबिलिटी थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ट्रिपल और डबल ऑफ दैट. मेरे को प्लेसमेंट में नौकरी मिल गया 15 लाख का, तो भाई तेरा पोटेंशियल 30 लाख का था, तो 15 लेके खुश हो गया क्या? सेल्फ एक्सप्लोरेशन में तेरा पोटेंशियल कहीं ज्यादा है. यू कैन डू दैट वंडर, बट आर यू सेल्फ एक्सप्लोरिंग और नॉट? सो माय सेकंड पॉइंट वाज, एज IIT, ask yourself, are you dependent upon your university or college, or you are self exploring? Because if you guys are not self exploring now,
in the life also you will not self explore. What is the meaning of that? जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे उसी में आप कंस्ट्रिक्ट हो जाओगे, क्यों? सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं आता तुम्हें, आपने कभी सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं किया, आपने कभी रिस्क लिया ही नहीं। रिस्क नहीं लिया तो क्या जॉब शिफ्ट कर पाओगे उतनी आसानी से? नहीं कर पाएंगे साहब। एंटरप्रेन्योर बन पाओगे? बिल्कुल नहीं बन पाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिस्क, दैट इज लाइक टेकिंग रिस्क, एंड आपने कभी वो डेवलप ही नहीं किया। यू वांट टू प्ले सेफ, एंड इफ यू वांट टू प्ले सेफ you cannot take risk. One thing I very commonly observe nowadays in the campuses, people are not looking for the jobs they like, they're looking for the jobs in which they can get the job actually. I mean in the campus जहां jobs आती हैं, प्लेसमेंट कौन सी नौकरी आजकल ज्यादा आ रही है? ये देखो, ये डेटा साइंस की आ रही है, चलो डेटा साइंस कर लेते हैं। You are not asking your interest actually. That cannot give you job satisfaction. Job satisfaction is another thing. वो यूनिक है, जॉब सेटिस्फेक्शन आसानी से नहीं आता, और आपको सच्ची बता रहा हूं वो इमीडिएटली नहीं आता। क्लोज योर आईज एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट आर योर टॉप 3 जॉब्स। इवन इफ आई गिव यू दोस टॉप 3 जॉब्स इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, यू मे नॉट गेट जॉब सेटिस्फेक्शन। एंड जिस चीज में तुम्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो शायद तुम्हें पता ही नहीं अभी कहां से मिलेगा। उसके लिए तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको तुम्हें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, उसके लिए निकालेंगे, यूपीएससी निकालेंगे। सेकेंड, थर्ड वाज ओके, if I want to become teacher, I'll become teacher in IIT Bombay sometime. I want to become in some top IITs. I want to become some. That time IIT Bombay used to be at the top. It still is a very good IIT. It's the top institutes of India. Next couple of years of my life, I got all these. But you know what? I could not enjoy any of these. That is going to happen with each one of you. वो आपके साथ होगा। ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं? कंप्रोमाइज, वो नहीं छोड़ते, वो वही लगे रहते हैं जहां पे वो थे। ठीक है, कंप्रोमाइज करेंगे। दे विल आस्क, आर यू हैप्पी? नो, आई एम नॉट हैप्पी। सैलरी तो आ रहा है, ठीक है, देन डेवलप हैप्पीनेस फ्रॉम द सैलरी, दैट्स इट। अरे मैं सेफ हूं, सैलरी आ रहा है, रेपुटेशन है, नाम है, उसी में खुश हो जाते हैं। दे नेवर आस्क तू किसी चीज के लिए बना होगा, शायद तू किसी चीज के लिए बना, तेरे में पैशन होगा यार किसी चीज का, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, दैट मे नॉट बी कंफर्टेबल, लेकिन एंड में तेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बिकॉज यू विल से कि आई क्रिएटेड समथिंग न्यू, आई क्रिएटेड सोल्यूशन टू समथिंग एंड आई क्रिएटेड समथिंग न्यू। वो चीज तुम्हारे में आएगा, पक्का आएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे अंदर बग होता है, लेकिन बग सर्वाइव नहीं करता है, मर जाता है। बग सबके अंदर होगा, मर जाएगा वो। क्यों मरेगा? क्योंकि तुम्हारे में वो रिस्क नहीं होगा उस बग को फ्लोरिश करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए रिस्क नहीं ले पाएंगे आप। उसकी स्टार्टिंग यहां से होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। दैट इज व्हाट आई एम ऑल टॉकिंग अबाउट। सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट, मोर ऑप्शन ऑन द टेबल। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट वे, देन यू लर्न मेनी थिंग्स। एंड एज आई वाज टेलिंग यू, लाइक एक्सप्लोर करना तो स्टार्ट करो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी वेरी गुड थिंग, एंड देन स्टार्ट डूइंग पैरेलली। दूसरी चीज मेरे को IIT मंडी में मैंने देखा कि स्टूडेंट सेल्फ एक्सप्लोरेशन कम कर रहे हैं। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग इन दैट, आई एम टेलिंग यू दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, कि जो IIT मंडी में उनको करिकुलम है, दे आर डूइंग वंडरफुल इन दैट। जो उनको पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। जो जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स आती हैं, कंपनीज बहुत अच्छी आती हैं, उनको जॉब्स बहुत अच्छा लगता है। But don't you think that is the academic part, curriculum part? What you did separate to that? आपने separate नहीं किया, कुछ self exploration नहीं किया, तो options can be restricted, highly restricted. That thing you need to consider in your mind. That मेरे को करना है साथ में। Certain things which all of us ignore, which should not be ignored, and there is a brahmastra in your hands, are your projects, which a majority of the campuses I find are people are not doing that good. Projects are something which can get you selected in top universities without any of the credential. Sir, I don't have GRE, okay done. I don't have CGPA, okay done. I don't have TOEFL, okay done. मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट किया है, that is so wonderful. That this is the technology I've used, this is the problem I've solved, and this is something which is unique. अगर आपने वो भी ढंग से कर लिया, believe me, you have done your job. You have done your job. So पूरी इंजीनियरिंग एक तरफ और आपका बीटेक का प्रोजेक्ट या एमटेक का प्रोजेक्ट एक तरफ। And as of now, as per my knowledge, only 5% students do their project nicely. 95% people don't do that. You should focus on your project and do it very meticulously. बहुत अच्छे तरीके से आपको अपना बीटेक का प्रोजेक्ट करना चाहिए। उसके अंदर वो सब चीज डालनी चाहिए जो आपसे एक्सपेक्टेड है। Hard skills, soft skills, everything you should do. And if you do that, then obviously, professors, industries are looking for that. I keep on interacting with the professors. Last 3-4 days, I think me and my team must have interacted with more than 50 professors. Ask them very clearly, what do you see in the prospective students? आप क्या देखते हो उनके अंदर?
they should have some passion, they should have some interest for the research they want to go for, they should be sincerely pursuing their things. एंड वो कहां से पता लगेगा? जो काम मैंने आपको दिया आपने कितने अच्छे तरीके से किया. एज एम्प्लॉयर, इफ आई वांट टू हायर यू, डू यू थिंक आई विल हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजीपीए? नेवर. आई विल हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड यू कैन बी एम्प्लॉय. वो कैसे पता लगेगा? मैंने तुम्हें काम दिया था प्रोजेक्ट करने का, वो तो तुमने किया नहीं, तुम मेरा एम्प्लॉय बन के कैसे काम अच्छा करोगे? प्रोजेक्ट इज द ओनली थिंग विच डिस्प्लेज योर एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स. I tell you that honestly. Others do not display your employability index. Comparison हम करते हैं कि साहब यूएस और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें थ्योरी सिखाया जाता है, हम थ्योरी सीखते हैं, वहां प्रैक्टिकल होते हैं. अरे दिया तो था चांस तुम्हें प्रैक्टिकल करने का, तुमने किया क्या? प्रोजेक्ट तो किया नहीं, थ्योरी पे भिड़े रहे, सीजी पे भिड़े रहे, एग्जाम पे फोकस किया, सीजीपीए बहुत अच्छी लाए. क्यों? कंपनी सीजीपीए के बेस पे अंदर तुम्हें रिक्रूट करेगी, वो तुम्हें शॉर्टलिस्ट करेगी, उस पर फोकस किया. तो एक अपॉर्चुनिटी था जिसमें आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स को शो कर सकते थे. ये मैंने प्रोजेक्ट उठाया, ये मैंने सॉल्व किया एंड आई डिड वंडरफुल प्रोजेक्ट एंड दैट इज रियली गुड. इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद योर फॉरेन एडमिशंस. इफ यू डू दैट, इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल. लेट मी पुट थिंग्स टुगेदर व्हाटएवर आई सेड. I told you that I'm studying in IIT Mandi. You are IITians. Please realize your potential. You are not meant for doing jobs. I'm not saying don't do jobs. Unless until you will do jobs, you will explore, you can never become entrepreneur. Without doing jobs, you can never become good entrepreneur also. Because that part of the story of employee, you will never know. How do you feel being employee? So your employee is also gonna feel the same way. How does he abuse the employer? You'll never know unless until you abuse your employer. So you need to do some hit and trial. फिर जॉब लगी उसको छोड़ा, जॉब लगी उसको छोड़ा, एक्सप्लोर किया, ये किया. ये सारे तुम्हें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक्सप्लोर करना पड़ेगा लाइफ में. एक्सप्लोरेशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ ग्रोइंग टेक्नोक्रेट. वो एक्सप्लोर करने से नहीं रुकता, करता है वो. ज्यादा अपॉर्चुनिटीज टेबल पे रखने की ट्राई करता है. जितना तुम दूर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट इज गोना हेल्प यू. As IITian, you should never join the Institute of Higher Education, which is below top 20, what we call today QS ranking. So never below that. So do you think I deserve that top 20? Yes, I'm saying that. You do that. But if you don't put things together, you will not get it. So what do you mean by putting things together? Ask yourself, did you mail that particular professor? Did you do his homework of his research papers? Did you see what research paper he is publishing? What work he is working? You did not do that. You simply saw, okay, this is my GRE score. पिछले साल GRE score इस यूनिवर्सिटी में एवरेज इतना गया था, मेरा भी यहीं पे जाएगा. Let's apply in this. That is not the way. The way is मेरे को इसके अंदर काम करना है और मेरे को इसके रिसर्च पेपर को देखना है, मेरे को इसको मेल ड्रॉप करना है, मेरे को लिंक्डइन पे पकड़ना है. That is the way you have to do it. Persist. Failure is something which you start liking. If you start liking the failure, believe me, you'll start enjoying the life. You'll start growing it. People hesitate that. Majority of the students don't explore because they fear the failure. They think that if we explore and if we don't get it, that will demoralize us. And then after that, that is not a good, comfortable situation. So let's exit it. Don't do that. Failures are beautiful. They're really good. But for failures, don't think never trying, not getting is not failure. I'm not saying that. That is not a failure. Sir, you told me to fail. See, I proved. I went to exam without preparation. No, that is not a failure. Please don't misunderstand this term. Failure means I prepared like hell. बहुत अच्छी तैयारी की and I really don't know why it did not click. That I say failure. Failure का meaning हमारे लिए वो होता है कि मैंने कुछ ट्राई किया, बहुत अच्छे तरीके से किया और मेरे को लगता था कि होना चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए, because I give my best. And I did not get that X factor. Then let's explore that X factor. वो फेलियर होता है और उसको लाइक करना स्टार्ट करो और वो आएगा. जितना ज्यादा लाइफ में आ रहा है, मतलब तुम ग्रो कर रहे हो, जितनी सक्सेस ज्यादा आ रही है लाइफ में और ज्यादा पेस से, प्लीज बी कॉशियस. यू आर स्पीडिंग अप. यू मे हिट समवेयर रॉन्ग. यू आर स्पीडिंग अप. लेकिन जितनी फेलियर्स आ रही है, दैट मीन्स यू आर एक्सप्लोरिंग एंड यू आर लर्निंग. एंड लाइफ में फॉर वेरी गुड ग्रोथ, 80% थिंग्स when you try should be failure, 20% should be success. Because 80% is learning and that 20% which you get is going to be very good success. That is going to be very good success. अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं चल रहा है, फेलियर नहीं चल रहा है,
you are not leading life, you are just passing life, you are not doing some purposeful. क्योंकि जब भी कोई पर्पसफुल करने लगोगे वो चैलेंजिंग होगा, और जब भी कोई चीज चैलेंजिंग होगी तो फेलियर आएगा, और जब फेलियर आएगा तो तुम्हारे को उसको करेक्ट करना पड़ेगा और तुम सेल्फ इंप्रूव करोगे और वही तुम्हें सक्सेस देगी. एंड दिस शुड बी द रेशियो 80-20, 80% फेलियर 20% सक्सेस. स्टार्ट गेटिंग दैट. और अगर तुम उसको अवॉइड करते हो कि नहीं, लेट्स चूज अ पाथ जिसमें मेरे को फेलियर ना आए, लेट मेक माई लाइफ वेरी वेरी कूल एंड कंफर्टेबल, उसमें एक लेवल से ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं होगी. ये मैंने जितनी आपको बातें बताई ना, दैट वाज टू फायर योर इमेजिनेशंस. और वो आईआईटी का एक ट्रेट है. जिस दिन तुम आईआईटी गेट के अंदर एंटर करते हो, एक चीज आईआईटी तुम्हें देता है, दैट इज इट फायर योर इमेजिनेशंस. और वो इमेजिनेशन इसलिए फायर करवाता है क्योंकि आप अपने आसपास लोगों को देखते हो, ही डिड इट, ही डिड इट, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट. उसको लेकिन थ्राइव करना पड़ता है. फायर द इमेजिनेशन को थ्राइव करना पड़ता है. आप उसको आगे लेके जाना पड़ता है. लीड अ दैट पर्टिकुलर लाइफ कि यस यू आर थिंकिंग समथिंग बिग एंड यू आर पुशिंग, यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड यू आर मेकिंग इट वर्क. किसी भी कॉलेज का जो रेपुटेशन है वो उसके स्टूडेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, द आईआईटीज जो ब्रांड आईआईटीज हैं वो अपने स्टूडेंट से हैं. देन कम्स फैकल्टी, देन कम इंफ्रास्ट्रक्चर, देन कम समथिंग एल्स, बट स्टूडेंट से हैं. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आईआईटीज के अंदर स्टूडेंट्स शुड बी रियली एस्पायरिंग, शुड बी रियली दे शुड बी एम्बिशियस, they should be ambitious, they should be craving for something, and they should be having that particular passion for attaining something. They should not fear the failures. ये सारी चीजों को अगर आप मिक्स करेंगे, then I will say, okay, I am studying in the IIT. That is how this thing is related. I will not take much of your time. As I told you that I want to tell you something, और जो मैं आपको बताऊंगा उसके बेस पे आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे. एंड आई एम डूइंग एकेडमिक प्रोफाइलिंग ऑफ आईआईटी. उसके अंदर एक ये भी कंपोनेंट है कि जब प्रेजेंटेशन दिया गया तो बच्चों ने क्वेश्चंस कितने पूछे. बिलीव मी, दैट इज आल्सो देयर. और अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछे, दैट मीन्स आपने सोचा नहीं, बिकॉज यू हैव टू आस्क मी डिफिकल्ट क्वेश्चन. और अगर आप आईआईटी अपनी मंडी को जिताना चाहते हो तो यू हैव टू फेल मी. आपको मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे जिसमें आई फेल. आई मीन आई से कि यस, हैट्स ऑफ टू यू, वेरी गुड क्वेश्चन. लेकिन मैं डाटा की बात नहीं कर रहा हूं. स्टार्ट आस्किंग, ओके आई वांट टू फेल दिस गाय, लेट्स आस्क हिम. पिछले साल बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जीआरई स्कोर कितना गया था? आई फेल, आई डोंट रिमेंबर. आई एम नॉट सेइंग डाटा, आई एम सेइंग जो मैंने आपको बातें बताई, सारी बातें मैंने बताई, मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो कि मेरा दिल खुश हो जाए कि यार ये था वंडरफुल. एक तो इमीडिएटली गिफ्ट मिलेगा, और दूसरा आई एम टेलिंग ऑनलाइन एवरीबॉडी, यस आईआईटी मंडी के बच्चों ने ये वंडरफुल क्वेश्चन पूछा. House is open for now discussion or question, whatever I said. I think I made my point, and the house is open for the discussion now. Yeah. Any question you want to ask? Yes. What is the name, and then you can shoot your question. That's yeah. Can you use this mic because this is recorded also? So my name is Satyanand Kaur, and I am currently doing MSc from IIT Mandi. MSc in which subject? In physics. Physics you are doing wonderful. Yeah. Okay. So my question is, like you have said that we should you should aim for top 20 universities as per the QS ranking, right? Actually, I was going to some of the profile of professors from all over the country. I mean, all over the world, and what I found that there are some professors which has extremely good profile in terms of research in physics on the topics which I am interested in. And I have found that they are not belonging to from some good ranking universities. Like they belong from universities that are under 300 all over the world. So does this really matters that we should only aim for 20 top 20 universities? Like if we are getting a professor which are extremely good in the research, then why shouldn't we go for there? Okay, let me ask you a question this way. The professor which you saw is working in top global university, right? Yes. And but he was graduate or something from not top 20 universities, right? No. He was from top 300 or something. Yes. But when he was trying to get into university, was there this in his mind कि मेरे को 300 में जाना है, कि he must be trying for something big? And did you compare him with that professor who graduated from top 20 university? I have not compared it, but they are like you are comparing that guy with him only.
I'm saying you compare that guy. No, I have went through many professors. Like Okay. I am also like there are many universities which are very exceptional in the Europe also. You're just saying showing the I tell you data of honestly, US. IITs don't come among top 200. I told you that in the beginning. Yeah, I'm. लेकिन यहाँ पे वंडरफुल प्रोफेसर्स है, मैंने आपको Yes. वो बोला. और आप हमेशा ट्राई करते हो whenever you write JEE or something. Do you think students in IIT Mandi are not good? 10 साल के बाद ऐसा भी हो सकता है, स्टूडेंट ऐसा होता है, IIT मंडी का जो स्टूडेंट्स होगा टॉप इंस्टीट्यूट नंबर 1 NIRF में जो भी होगा इंडिया का, उससे ऊपर जाएगा. बट जब उसने ट्राई किया होगा तो उसने टॉप के लिए किया होगा, राइट? दैट इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड. वी डोंट गेट कंटेम्प्टेड बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी. Okay. वो जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि सर वो वंडरफुल है, आई एम नॉट डिनाइंग, वो वंडरफुल होगा, लेकिन मैं तो आपको एक मिशन दे रहा हूं आपके लिए. अगर आप वो सोच के आगे चलेंगे, यू विल नॉट इवन लैंड अप इन 300. Okay. Yes. And like I like to add one more point. Like we know that every year professor used to get like researchers used to get some kind of award, right? Some kind of award like a Nobel Prize. award. They get awards. Nobel Yeah, Prize. yeah. Now, if you will compare, like there are many professors who are not belonging to this big universities, but they have got this Nobel Prize. Yes. Then, is it the See, because that is the second part of the story now. If I'm addressing the faculties, teachers are sitting all over India, some top college, some not that good college, and I'm saying wherever you are, you can do wonders. You can do really good wherever you are. And then I'll give this example. Do you think all Nobel awards come from, top 20? No. Let me give you an example. It has come to Hargobind Khurana also, was from Punjab University. So do you think it comes only from top? No. It comes from ordinary. लेकिन उससे तुम्हें क्या मोटिवेशन मिलेगा? I mean, this information, how you want to use it? Let's not be in the top. Is that? okay? तुम एक स्टूडेंट हो, तुम उस जर्नी पे हो जिसमें मेरे को तुम्हें वही बताना है जो तुम्हारे लिए ठीक है. अगर सपोज यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, you did not hit in this 20, that stage is gonna come. When you did not hit this, gonna ask me, I'm not getting top 20, sir, I'm getting 40. Now tell me, what should I do? Do you think I'm gonna tell you don't join it? No. I'm gonna say it's a wonderful university, but there is that part of story. Before that, if I say no, don't worry, it will not motivate you. I'm telling you, you should aspire for something big first, at the first place. And if you aspire for something big, you develop the stamina. जब मैं तुम्हें टारगेट दे दूंगा कि टॉप 20 में जाना है, तो तुम यार उस टारगेट के साथ मूव करोगे. आज मेरे को क्रिकेट में 2020 में 200 का रन बनाना, कैप्टन ये बोल रहा है, आई एम कैप्टन ऑफ 2020 मैच. आई एम सेइंग भाई देख लो, आज हमें 200 बनाने, चाहे कुछ भी हो जाए, मोटिवेट कर रहा हूं. एक प्लेयर आता है, डू यू थिंक ओनली टॉप 200 बना के जीता जा सकता है? अदर डे 100 मैच 60 पे भी जीत गए. व्हाट अ कैप्टन इज गोना टेल? दैट इज ट्रू. वो मैं तब बोलूंगा जब हमने 60 पूरे 200 की ट्राई किया, 60 हमारा स्कोर आया, फिर मैं उनको बोलूंगा कि सी, डू यू थिंक 60 पे हम जीत नहीं सकते? वी विल डू दैट. Understood what I'm trying to say? So don't start your journey seeing those examples which may not let you give your 100%. It will again put you in the comfortable. I don't want you guys to be in comfortable zone. Never be in comfortable zone. There is another story of the life. If you think you are in comfortable zone, you are not progressing. तो उसको थोड़ा सा high level पे रख के then you proceed. You have couple of more questions. Yes, keep asking. No, I'm done. Only these two? Yeah, But still you are not looking like convinced with what I said. I'm confused. No, you are not. I can see as a teacher, I can see your response. कि मैं कुछ पूछ रहा था, इस बंदे ने मैनिपुलेट करके मेरा आंसर जो है कुछ और दे दिया. I am very good in manipulation. I'm telling you that honestly. No, But I don't want to manipulate you. Really confused. Are you sure? Confused. Yeah. Bow to him for asking good questions. Questions are good. Give him a award and then we give to him. Okay. Clapping for him is a good question he was asking. Any other question? Yeah, go ahead. Yeah. What's your good name? What's your good name, please? Huh? Yeah. The girl there. Yeah. Okay. Please take this, Shubhangi. Okay, my name is Shubhangi and I'm pursuing MTech in biotechnology. MTech in biotechnology. Yes, sir. So my This question. building belongs to you only, right? No, sir. Biotechnology का ये department है? No, nearby. अच्छा, nearby. Bioex. Yes. Yesterday I was there. हाँ. Yes, sir. So I want to ask something related to biotechnology itself. First I wondered that why IITs they
what they are seeking from biotechnology. I want to ask because, sir, when I have completed my MSc already and I am pursuing MTech. So, what is the reason behind it? I want to share that also. At very first, I want to say that I had cracked the IIT jam, but I didn't get any IIT just because IITs are not giving MSc in biotechnology, but they are giving the MTech in biotechnology. But from previous 2 years, they are giving those things from Gate B, means they are taking the students for MSc now also. But few, only 2 and 3 IITs, not we have per state, almost per state have its own IIT. Yes. So that's the lake for me for the 2 years. Now the next thing is that now I have came to the IIT, so that's all because of specialization, which I want to pursue. Means definitely, seeing those catastrophic pathway, I was going for the PhD. I have given one interview in the IIT Jodhpur, and I had qualified first round, but not the second, just because they said that you don't have specialized skills for the related thing, that is bioinformatics, which is very much upgrowing field in the biotechnology. And the biotechnology is a field at everywhere, means every field is combining there and they are working for the biology. So that was the thing, because every person from the another field, they are going for the biology and they are specialized in that. So why the core biologists will be selected? That's the thing. So I came to IIT saying that so I should go for MTech and do the specialization in this thing, and should get some skills, and even go for some JRF. I have cracked the gate. That's why. But that's the thing that it's a long thing for me, means I'm investing much of my years here. So what should I think? Okay, so what name is sir? Shubhang, what is your name? Shubhangi. Shubhangi, what I understood, I mean, let me put the question in perspective, whether I understood it correctly. Before that, I want to ask you is, whatever skills you think are required for industries, what is stopping you from acquiring those skills in IIT Mandi? Yes, I am. You're getting those skills? Yes, I am getting. Then where's the trouble? What's the problem you are asking? Yeah, where's the trouble? Problem is about my ears. About your ears. Be Yes. more specific. Yes, my specific. जितना तुम्हें टाइम लग गया यहाँ तक आने में. Yes. Is that? Sir, तो मैं बोलना चाहती हूँ that PhD, why the people means who are recruiting us for PhD, they are not taking students on the basis of their. Yeah, you stop comparing yourself with others. Actually, that is what another thing I'm looking for. Maybe you are comparing yourself with other branches or other people, right? Yes, sir. That is also the thing. So, see, I strongly believe in this thing. आपने जो बायो लिया होगा, बायोटेक्नोलॉजी लिया होगा, वो आपका डिसीजन रहा होगा, right? Now the second question comes, and I tell you that very honestly, there are certain branches of knowledge, basic sciences especially, physics, chemistry, bio. Whenever you choose some branch of knowledge for you, let me take you to 10th level. You decided one fine day that I want to pursue education in economy, sociology, history, culture, mechanical engineering. That was your decision, and you must have taken that decision at that time thinking something. Number one. Second point, when students do comparative analysis of the branches, I tell you from my own experience, you name top 100 professionals in the world, top 100 professionals, you will not only find one particular profession in that. You will not find कि वो computer engineer है या वो particular profession है, नहीं, उसमें आपको commerce का मिलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ का भी मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी मिलेगा, फार्मासिस्ट भी मिलेगा, उसमें आपको सब मिलेगा. दैट मीन्स टॉप के रास्ते कई हैं. देयर आर सो मेनी वेज टू गो एट द टॉप. एवरी पाथ हैज इट्स ओन पेक्यूलियरिटी. किसी रास्ते में अलग चैलेंज है, किसी रास्ते में कोई अलग चैलेंज है. इफ आई टॉक अबाउट मेडिसिन, द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर. इंजीनियरिंग में तुम बीटेक करते हो, मास्टर्स करते हो, हाउ मच इज द एज? 23, 24, and you start earning good. Think of medical profession. They will do their MBBS in 23, 24. Then they have to do MD, they have to do DM. They start earning good. Which you start earning good at the age of 25. They start doing it maybe 35, after 35. But then that is a profession he has chosen.
Now if in my wisdom I start comparing today, let us say mechanical engineering, computer engineering and medical, believe me that comparison will not be appropriate. Only question now is this: tell me now with this particular my situation, what skills I can acquire, what domain I can hit and how I can reach the top of my field. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप टॉप 100 प्रोफेशनल लेके बैठो, आपको दिखेगा ये केमिस्ट्री का है, ये लॉ का है, ये हिस्ट्री का है, ये मैनेजमेंट की तरफ से आपको दिखेगा वो। अगर ऐसा नहीं होता तो बिलीव मी कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट ओनली कपल ऑफ प्रोफेशंस, बट देयर आर प्रोफेशंस। ओनली थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, प्लीज डोंट डू दैट। अदर्स मींस किसी और के साथ भी नहीं करना है और किसी प्रोफेशन के साथ भी नहीं करना है। कुछ ऐसा जरूर है इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन में दैट सम इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशंस आर they don't provide much jobs in India, but I tell honestly that Indian technocrat is not catering to the market of India. Indian technocrats are catering to the global markets. Indian engineer is not Indian engineer, it's not meant for Indian economy only, वो वर्ल्ड की इकोनॉमी चला रहे हैं हम लोग। You never know as a expert in biotechnology or this thing, आपने वर्ल्ड के किस कॉर्नर में, किस लैब में, कहां पे कंट्रीब्यूट करना है। You never know that, and that brings me to again the my starting line. I strongly believe you should explore. You should explore. मैंने आपको बताया कंपैरिजन करना बंद कर दो, आप अपना पास छोड़ दो, आप sit on the table, ask couple of things. I give you very straight recipe for that. What are the skills I need to know? What is the path for me to go at the top in my profession? It may take 2 years, it may take 4 years, don't compare. But path क्या है? ये path है, ये मेरे को अब करना है। पास्ट में जो हुआ है, जैसा भी है, उसको कंपैरिजन मत करो, वो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देगा। इट इज गोना वेस्ट योर टाइम। किसी और प्रोफेशन के साथ अपना कंपैरिजन मत करो, बिकॉज इफ यू डू दैट अगेन योर एनर्जी इज वेस्टेड। डोंट डू दैट। तो आपको उन डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। गॉट इट? दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। या Thank you, sir. Okay, I'm thankful. 3 hand raised, so I'm really happy. Professor Hitesh, students are asking a lot of questions. Yeah, what's the name? Sir, my name is Arpan. Arpan, question क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक बात बोली कि नेहरू जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने आईआईटीज बनाई हैं इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हाँ जी। पर आपको नहीं लगता है कि आईआईटीज ओरिएंटेड खुद हो चुकी हैं प्लेसमेंट की तरफ? एज आई एम स्टूडेंट इन क्लास 10, क्लास 12, आई ओपन माय न्यूज़पेपर एंड आई सॉ दैट द आईआईटी स्टूडेंट गॉट 2 करोड़ प्लेसमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। तो आईआईटीज खुद को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं कि हम प्लेसमेंट के लिए ही हैं, तो इसमें फिर स्टूडेंट कहाँ गलत है? तो कल प्लेसमेंट सेल बंद करते हैं, फिर देखो क्या होता है। You know why it happens? Please, I got it. And sir, another thing, you say about the self exploration. आपको नहीं लगता सर इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट के सेल्फ एक्सप्लोर करने में? बिल्कुल। और अगर आप आईआईटीज के एनवायरनमेंट आप हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो मैं देखता हूं कि आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो इन आईआईटी मंडी लेट अस लाइक there is a mountains and there is a river, so that is obvious options ki when we can go outside and for trekking and for hiking, something like that. But in institute these type of things are prohibited. After 8 to 9 we can't go outside the campus. Then how we self explore? By sitting in lab we can't do the self exploration. Done. Then what? Done? Should I answer? पहला क्वेश्चन था प्लेसमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आपने मेरा वो पॉइंट मिस कर दिया कि एंटरप्रेन्योर तभी बन पाओगे अगर कुछ नौकरियां करोगे। आई टोल्ड दैट। जब तक जॉब नहीं करोगे पता नहीं चलेगा एम्प्लॉय को हैंडल कैसे करना है। आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो। आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू डू योर जॉब्स फर्स्ट, एंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू दीज ऑप्शंस बिकॉज इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब्स प्रोवाइड करनी है। आई ऑल्सो बिलीव हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बना। आई बिलीव दैट कई लोगों ने डीआरडी में तो चलाना है, सारे एंटरप्रेन्योर बन गए। मैंने डीआरडी ज्वाइन किया, छोड़ दिया। मेरे को लगा मैं साइंटिस्ट अच्छा नहीं हूं, मैंने छोड़ दिया। मेरे को लगा मैं आईटी सिस्टम के अंदर अच्छा प्रोफेसर नहीं बन सकता, मैंने आईटी सिस्टम का टीचिंग छोड़ दिया। तो भाई आईटी सिस्टम के लिए भी तो प्रोफेसर चाहिए, वो कौन बनेगा? जब नेहरू जी ने स्टेटमेंट दी थी एब्सोल्यूट टर्म में नहीं दी थी। नंबर 2, एक प्रोफेसर एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, मैं उसकी बात पे भी आ रहा हूं भाई। एक प्रोफेसर एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। दिस इज व्हाट ही सेड, यू बी एंटरप्रेन्योरियल, एक्सप्लोर करो। जॉब लेना मैंने आपको बोला इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। जब तुम जॉब लेने बैठते हो, एक कंपनी तुम्हारा एनालिसिस करती है, कंपनी बताती है कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं।
तुम्हें कंपनी बिना बात के 25 लाख नहीं देगी, वो तुम्हें पता लगता है मेरी मार्केट वैल्यू इतनी चल रही है, दैट यू गेट टू नो, एंड उसके लिए तुम कुछ तैयारी करते हो। जॉब के लिए जरूर जाना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी चीज की तैयारी करते हैं, देन कंपनी कम्स एंड दे से कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं, मैं जॉब में नहीं, कंपनी के लिए नहीं जाऊंगा। प्लीज गो, व्हाई यू गो टू द कंपनी, दे रिजेक्ट यू, एंड देन यू डू योर एनालिसिस, यार मेरे को रिजेक्ट क्यों किया, देन यू अगेन ट्राई, तो तुम इंप्रूव होते चले जाते हो। तो जॉब तो लेना है। सर जो जॉब लेते हैं वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। अरे मैंने ली 3, ये तो गवर्नमेंट की बता रहा हूं, बाकी बहुत सी ली मैंने जॉब्स की, उसके बाद ही तो तुम सीखते हो, अदरवाइज हाउ यू लर्न। पहले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, प्लेसमेंट सेल होना चाहिए और आपको जॉब लेनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं बोला आप मत लो, क्योंकि अगर मैं उसको हटा दूंगा प्लेसमेंट सेल को, तो तुम्हारी लर्निंग और भी डिमिनिश्ड हो जाएगी, इट विल नॉट बी डन। ये पहला क्वेश्चन था। आपका दूसरा क्वेश्चन, कैन यू अगेन इलेबोरेट व्हाट वाज दैट सेकंड पार्ट? दैट वाज क्वेश्चन ये था सर कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन है सर, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड, आई गॉट योर क्वेश्चन। नाउ सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप टर्म ही नहीं समझ पा रहे हैं। पहाड़ों पे चढ़ने को मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बोल रहा हूं। कैन आई एक्सप्लेन दिस? या यू प्लीज एक्सप्लेन। या लेट अस अज्यूम सामने एक पहाड़ है ग्रिफिन। हाँ जी, आप इसको कई जगह से चढ़ सकते हैं। टेक दिस माइक। क्या कमांड से भी चढ़ सकते हैं, कटिंडी से भी चढ़ सकते हैं। एंड इन पहाड़ों को चढ़ते हुए मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे आपने एक पॉइंट बोला था कि हर रास्ते की अपनी कठिनाई होती है। तो अगर आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं तो वो आपको अपनी जो उसकी कठिनाई है वो आपको दिखाएंगे, और जब आप उन कठिनाइयों को क्रॉस करते हैं, जब आप उस पहाड़ के टॉप पर पहुंचते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि यू कैन डू समथिंग जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है। तो ये कैसे खराब हो सकता है कि पहाड़ चढ़ना सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है? आप एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और बच्चे ब्यास रिवर में जाना चाहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कठिनाई को फेस करने के लिए, आप क्या करेंगे? फ्रीडम दे देंगे उनको, भेज देंगे। आपको पता पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है? बच्चे मरे हैं, यू नो दैट? दैट्स द इंस्टीट्यूट रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग बेटर। अभ्यास को क्या करेंगे वो? इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि जाना भी बंद कर देना, करना पड़ता है, डेंजरस। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। एक्सप्लोरेशन आप नहीं समझ पा रहे बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सप्लोरेशन मींस इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर सेफ्टी। जो आपने एक्सप्लोरेशन के मेरे को एग्जांपल्स दिए कि मेरे को पहाड़ ऐसे चढ़ना है, मेरे को ऐसे चढ़ना है, you know your responsibility. Only these options, but these are also the options. Give me other options. What? Self-exploration. Exploration where safety is not compromised, and IITs is stopping you from that. Meditation. Who's stopping you from doing meditation? So I am not saying that everyone is not interested in meditation. There is a You different. give me way one everyone is example interested where IITs is not letting you self-explore. रात में 10 बजे के बाद बाहर निकलना मना है सर। क्यों मुझे क्या पता? मना है क्या? But I found students in that campus 12 बजे भी। कैंपस के बाहर रहना अलाउ। कैंपस के मींस गेट के बाहर। यस सर। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ सर, फिर हमें भी नहीं अलाउ किया गया। यूनिवर्सिटीज देखिए ना सर, आप जेएनयू देखिए। अच्छा, why you want to go after 10 PM out of a campus? What do you find outside? Because this is also the part of life. Like what? Part of life. नहीं, बाहर कुछ होना भी तो चाहिए। क्या है बाहर, मेरे को बताओ ना। Because I also would like to see that today. लेपर्ड होते हैं यहाँ पे, I was told. तुम मतलब लेपर्ड को सर मेरे को देखना है, जिस दिन आएगा तो क्या होगा। अरे चलो ठीक है, बैठ जाओ तुम। गुड। अरे क्वेश्चन या उसको दो। Very specific question. हाँ, प्लीज टेक दिस माइक। क्या I have very specific question which Satya has इसको started. लगाओ सब। हाँ। So my question is like, what you choose when you are deciding your institute, like its ranking or the professor and its research. So what do you prefer? This is my first question. अब मेरे को दोबारा से रिफ्रेश करो। What do you choose among what? Like, what do you prefer the most? The professor and his particular research, what is he doing, or the institute ranking and where it is Yes, situated? good question. So, this is So you should actually go for your interest first, and then choose professor who is working in that interest and he is doing marvelous. वो चाहे top 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो. That is very clear. इंस्टीट्यूट के लिए इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करो, अमेरिका के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करो, ये मैं बोल रहा हूं आपको। आप ऐसा मत करो। हम देखो ग्लोरीफाई करते हैं टॉप 20 यूनिवर्सिटीज। आई डिड नॉट से ओनली दीज 20 यूनिवर्सिटीज आर गुड, आई डिड नॉट से दैट। मैं आपको एक फिलोसॉफिकली कुछ चीज बता रहा हूं यहां पे कि हम बेस्ट के लिए एस्पायर करें। अब आपने बताया कि सर हमें बेस्ट प्रोफेसर के लिए एस्पायर करना है या बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए? आंसर इज बेस्ट प्रोफेसर, बिकॉज यू हैव टू लर्न अंडर हिज गाइडेंस। yeah. You know, when you talk about graduation,
then you go for university because there are so many professors and you have so much other infrastructure. When you go for specialization, you go for professor because that is who is a guy who is gonna teach you. And बीटेक में तुम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा, तुम्हें अपना इंटरेस्ट का पता लग गया, अब तुम्हें एक आइडेंटिफाई करना है मेंटर जो तुम्हें स्पेशलाइज बनाए. सो यस, बीटेक के लेवल पे कॉलेज, एमटेक के लेवल पे प्रोफेसर. बट व्हाट इफ वी गेट बोथ? देन एज आई टोल्ड यू, एज आईआईटीएन आई वांट मोर. सो अगर मेरे को कॉलेज भी अच्छा मिल रहा है, मेरे को प्रोफेसर भी अच्छा मिल रहा है, आई वुड लाइक टू टेक दैट. इट्स लाइक दिस यार. जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग्स निकलती है, क्यूएस रैंकिंग्स निकलती है, मैं बहुत से आईआईटीज एंड कॉलेजेस में जाता हूं, यूनिवर्सिटीज में, इंडिया अब्रॉड. आई स्ट्रांगली बिलीव के रैंकिंग्स में अगर 50 का डिफरेंस भी है तब भी कॉलेज सेम ही है. और एक बार नाम बन जाता है ना, हार्वर्ड का नाम बन गया, आपको एक्चुअली मैं बता रहा हूं, बहुत सी दुनिया में ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं इससे बहुत अच्छी हैं अभी, लेकिन नाम बना हुआ ना पुराना, वो पुराना नाम ना कितने सालों का है, वो नाम चलता चला जाता है. सो यू कैन नॉट बी वेरी इन दैट. All I meant is seek top 20 means put your best effort. That was the point actually. I have answered my question? Yes, sir. Absolutely. Okay, good. And I have one more doubt. Good question. Yeah. Good question. Good. I have Okay, one more listen. small doubt. Like when go we ahead. are preparing, Get the bottle before you ask me that question. Yeah. you can take it back. No, I will not take that. Okay, Yeah, go ahead. I have when we are planning to go abroad, one major thing comes to my mind is like financial support for starting 1 month or air expenses and all those things. So is there any way like instead of I can target those things? नहीं, मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, फिर से पूछो. लाइक मतलब स्टार्टिंग का 1-2 महीना आपको खुद से सरवाइव करना पड़ेगा. वहाँ फॉरेन की बात कर रहा हूँ. फॉरेन की हाँ बात जी. कर रहा हूँ कि आपको स्टाइफंड पहले दिन से नहीं मिल रहा, नहीं मिलता. हाँ, ठीक है, और आपको साथ ही साथ एयर मतलब वो ट्रैवलिंग खर्चना पड़ता है. एक्सपेंसेस और वो, राइट. तो काइंड ऑफ वो काफी बिग अमाउंट है. अगर आप किसी स्मॉल हाउस फाइनेंशियली स्मॉल हाउस होल्ड से आ रहे हो तो उस केस में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई ऐसी चीज है जिसको आप मतलब आप देखो क्या होता है, मैं उसमें आपको एक्चुअल बता रहा हूँ. प्रोसीजरल क्वेश्चन पूछा है आपने. जब बैंक लोन देता है ना, तो आपसे पूछता है आप कहां से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहां के स्टूडेंट हैं, और आपको कहां पे एडमिशन मिला है. मैनेजर विल आस्क यू दिस टू. एंड द पर्सन हु इज सिटिंग एंड द डिसीजन टेबल, मेरे को लोन देना है, वो ये चीज देखता है कि इस ग्रेजुएशन के बाद इस बच्चे का पोटेंशियल है मेरा लोन वापस करने का. आपने ऑलरेडी एक चीज अर्न किया है, दैट इज यूर ऑलरेडी फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज. पहले तो वहीं पे लोन सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपको वहां पे करती हेल्प करेगी. दूसरा, जिस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिला है उसका रैंकिंग भी देखते हैं, वो आपको बहुत आसानी से लोन मिलता है. नंबर 2, फिर भी जेब में, उसके बाद भी जेब में 1.5 लाख रुपया होना चाहिए. अगर आपके पास वो भी नहीं है, देन प्लीज गेट दैट फर्स्ट. अगर आप बोलते मैं पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स किसी से अरेंज नहीं कर सकता, डू द जॉब फर्स्ट फॉर 6 months. क्योंकि क्या है ना यार, प्रॉब्लम्स को खुद ही को रिजॉल्व करना है तुम्हें. अगर आप मेरे को बोल रहे हो मेरे को पेन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, सस्टेन इट, फाइंड द सोल्यूशन. आई एम नॉट गोना गिव यू पैरासिटामोल इमीडिएटली और वट एवर मेडिसिन फॉर रिलीविंग ऑफ, आई एम नॉट गोना गिव दैट. मैं बोला उसको फेस कर. तरीका बता सकता हूं, बेस्ट फेस करने का क्या तरीका है. जैसे पेरेंट्स को देखा नहीं, पेरेंट्स कांट हेल्प यार, फ्रेंड्स नहीं हंस सकते, तो क्या मैं कमा सकता हूं, लेट्स डू जॉब फॉर 6 months, मैं इतना पैसा एक्यूमुलेट करूं कि अब मैं जा सकूं. बाकी तुम्हें सारा लोन मिलता है. लोन लेने से तुम्हें कोई you need not to worry about that because there is a return on your investment concept. ROI concept क्या होता है? Let me tell you. When you go to Europe, you spend 15 to 25 lakh for your masters and all. When you go to US, you spend 35 lakh to 50 lakh. अब मैं यूरोप जाऊं कि अमेरिका जाऊं? Just see where is the return on your investment. What is the return on your investment and how it is calculated? If you spend on your education 25 lakh rupees. एंड पहली जॉब तुम्हें 25 लाख की लगती है, इन हैंड नहीं बोल रहा हूं, लगती है, तो इट इज अ वेरी गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. लिसन दिस अगेन, इट्स अ थंब रूल. इफ यू गाइस टेक लोन ऑफ 25 lakh फ्रॉम सम बैंक फॉर योर एजुकेशन एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग और समथिंग, पहला जो जॉब तुम्हारा लगा वो 25 lakh का लगा, कंपनी ने दिया तुम्हें, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. नाउ आई एम गिविंग यू 2 cases. मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने 15 लाख का जॉब लिया. मैंने लोन 25 लाख का लिया, मेरे को 25 लाख का जॉब लगा. और मैंने लोन 50 लाख का लिया और मेरे को 35 लाख का जॉब लगा. कौन सी उठाओगे? सोच के बताना, कौन सी उठाओगे और क्यों? क्वेश्चन दोबारा सुनो और इस पे बहुत गिफ्ट देना हमें अगर कोई इसका आंसर सही करता है. 3 सिचुएशन दे रहा हूं. मैंने सर कोई पैसा नहीं खर्चा, मेरे को 15 लाख का लगा. मैंने सर 25 लाख खर्चा और मेरे को 25 लाख की नौकरी लगी. मैंने सर 50 लाख खर्चा और मेरे को 35 लाख की नौकरी लगी.
करियर डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट डिसीजन थर्ड है? वन, फर्स्ट, third one. व्हाई यू थिंक सो? थर्ड वन, सेकंड, हाँ सेकंड, थर्ड वन। हाँ, एनीबॉडी सेइंग थर्ड? हाँ, व्हाई? सर बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, वो तो आपको हर साल 50 से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें मतलब जो कंपाउंडिंग का जो बेसिक रूल है कि मतलब 50 के बाद अगला 55 होगा वो। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो आंसर आता है ना, उसके बेस पे मैं तुम्हारा भविष्यवाणी करता हूँ। पहला वो चूज करेगा जो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। वेरी वेरी सेवन जाएगा, पक्का जाएगा। दूसरा टिपिकल जो जॉब्स कॉर्पोरेट में करते हैं, दैट इज नंबर 2। थर्ड एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि तुम्हें रिस्क लेना है, तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं तुम्हें बता रहा हूं रिस्क लेना है, एंड रिस्क लेना है एंड सेफ नहीं खेलना है, वो तीसरी है। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं कि सेफ मत खेलो, एवरीबॉडी कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर, लेकिन ये डिसीजन जो होते हैं दैट इज हाउ इट इज डिसाइडेड। आई वांट टू प्ले वेरी वेरी सेफ, कोई लोन नहीं, कोई मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं, आई एम अफ्रेड ऑफ लायबिलिटी। एक एंटरप्रेन्योर लोन ले लेके एम्प्लॉइज के घर चलाता है, यू नो दैट, वो नहीं डरता उससे। अगर तुम उससे डर रहे हो कि यार मैंने बैंक से इतना पैसे ले लिए, मेरा होगा क्या, यू कांट बी एंटरप्रेन्योर। एंड if you want to play very very safe, no, I am afraid of bank loan. अरे loan is nothing but money, money is a resource, spend it। 35 लाख लेने के बाद, 50 लाख का लोन लेने के बाद सोच प्रेशर कितना आएगा। प्रेशर इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म। प्रेशर से डरो मत। प्रेशर आजकल सारे मैं न्यूज सुनता हूं, प्रेशर को कम कर दो, बच्चों के ऊपर प्रेशर कम कर दो। कैसे डेवलप करोगे यार? प्रेशर कम होने से डेवलपमेंट नहीं होता। प्रेशर जब आएगा तो उसके तरीके होते हैं उनको एमेलियरेट करने के लिए। प्रेशर से आप तभी मरोगे अगर इंटरनली वीक हो, अदरवाइज प्रेशर तुम्हें कभी नहीं मारता। अगर तुम स्ट्रांग हो तो प्रेशर से नहीं मरते। और एंटरप्रेन्योर एक ट्रेड भी होता है। मेरा भाई डिस्कशन इज नॉट टुडे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, बट आई एम सेइंग व्हेन यू टेक लोन ऑफ 50 लाख एंड यू गेट 35 लाख जॉब, टेल मी इन व्हिच सिचुएशन यू विल बी पुटिंग योर बेस्ट। थर्ड केस में, क्योंकि तुमने 50 लाख का लोन लिया है और तुम्हें 35 लाख में तुम्हें उसको वापस भी करना है, और 35 लाख के बाद जो तुम लॉजिक दे रहे थे, दैट वाज वन ऑफ लॉजिक, बट दैट वाज नॉट मेल लॉजिक, तो तू एंटरप्रेन्योर बनेगा नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूं। लेकिन अगर तुमने आंसर ये दिया होता कि सब 50 लाख लोन लेने के बाद इतनी फायर लगी होगी मेरे को कि मेरे को पैसे वापस करने हैं, रिस्क लिया है मैंने और मेरे को उसको करना है, तो तू एंटरप्रेन्योर बनेगा। पहला सेफ खेलो, गो टू सम सेफ जॉब। सेकंड इज ओके यार, जितना दिया उतना आ गया, कॉर्पोरेट टिपिकल आईटीएन। सेकंड इज टिपिकल आईटीएन आज के डेट का। थर्ड इज एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट इज आई मीन वेरी वेरी सेफ स्टफ। दिस इज हाउ इट गोस। Have I answered my question? Yes, thank you. Any other question? गिफ्ट उसको ऑलरेडी जा चुका है। go yeah, next question yeah. अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे तुम लोगों से। Good. So myself Adarsh Shukla, and I'm a student of MSc from MSc. So I have few questions. Firstly, you are talking about the QS ranking in the world. So we are not looking at the factors that are actually governing the QS ranking in the world. Why India is lacking behind in those QS rankings? Because of the academic position, because of the student position, because of the academic Take this faculty. Okay, because of the academy per faculty per student ratio, because of the international faculty per student international student ratio. So, and we are not even also looking the condition of the employees that are the employee of the Harvard University and that are the employee of Indian universities. For sake of example, if we talk about the money that a PhD student get in international universities is around 2 to 3 lakhs. If we are talking about good universities, but if we compare that with India, that the best institute in India, IISc, if person is qualified JRF, he will be receiving 35,000. If he is qualifying PMRF, he will be receiving 70,000. And similar to the state university, he is qualifying JRF and contacting a professor to join a PhD. So we are not discriminating or differentiating between the top and low institutes in India. This is my first point. So we are lacking behind in QS ranking because of those factors also. Second thing, sir, my personal question, patents, publications actually show the relevant work you have done. I think so that if you have a publication, people will never question that whether he has done work or not. So some fields require more time to publish a paper. Some fields you can say require less time to publish a paper. So like organic synthesis, it is a vast field and it is a so time consuming field. So publishing a paper in total synthesis required 2.5 years. So some student who is doing project in organic synthesis in MSc, sir, how he or she can say that he has actually done work without a publication in USA or in Germany? Thank you. अभी जरा दोनों क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करो। सर हिंदी में बोल दूं? हाँ, नहीं मेरे को इंग्लिश आती है वैसे, लेकिन हिंदी में बोल दे।
तू तो इंसल्ट कर दी यार, अब बोल। नहीं नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, आप सीधा, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, क्वेश्चन पूछना बस एक लाइन का, वो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तुमने जितनी बातें बताई उसमें मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं चला क्वेश्चन क्या था। पहला पॉइंट बोलो। Sir, the top researchers in India are and the not top researchers, mediator researchers in India are not treated differently. They are treated same ways in Where? In India? terms of ठीक है। उन कंट्रीज में। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? हम क्यूएस रैंकिंग में इसलिए नहीं है क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इज दैट? तो अगर तुम्हें क्यूएस रैंकिंग में ऊपर लेके जाना है हमें हमें तो क्या करोगे तुम? जो हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं, हाँ, जो आईआईसी में है, हाँ, आईजस में है, सब पहले मैं उनको रेप्यूटेड बनाऊंगा। कैसे? सर उनकी मतलब सैलरीज रेज कर। अरे वंडरफुल यार, मतलब यू विल हैप्पी विद। अच्छा अच्छा, और अगर कोई लड़का आईआईसी में रिसर्च करता है, कोई लड़का स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च करता है, तो मैं उसकी स्कॉलरशिप में भी अंतर करूंगा। मतलब स्कॉलरशिप बढ़ाना चाहिए। हाँ, और हाँ, और सर मैं हमारे यहाँ अगर हम देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं, तो साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील एंड दीस टाइप्स ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। और सर हमारे यहाँ फैकल्टीज भी या तो एक आधी यूरोप से, तो फिर नहीं भी आती। हमारे यहाँ ये रेशियो नहीं। इसमें क्वेश्चन क्या था ये? टाइम कंज्यूमिंग। ये नॉलेज प्रोफेसर ने पूरी लाइफ एप्लीकेशन किया, उसको पता नहीं क्या चीज। ये गोन
Okay. Okay, next. हाँ. No. Just kidding. Yeah, go ahead. और जॉब सिक्योरिटी, you know the job security पे आएंगे तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जब बुलाते हैं तो आते क्यों नहीं? फॉरेन प्रोफेसर छोड़, जो इंडियन वहां पे पीएचडी करके बैठे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहे हैं, हिमाचल सी है, वो आईआईटी मंडी नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर लीडिंग दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सर क्या हम लोग ऐसे अरे ऐसे क्यों रह जाएंगे भाई? जो रिसोर्स आपके पास है, मैं उसका सोल्यूशन देता हूं। देखो एक्सपोजर लेना ना, फॉरेन प्रोफेसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया मेरा। इंटर्नशिप करने जाओ बाहर, सब लोग ट्राई करो, एक्सप्लोर। Why you want foreign one professor to come and teach? Why don't you go to that university and meet with 10 or 20 professors during internship? Sir, can we go in MTech? Yes. Can we go in MTech? Yes. But sir, then 2-3 lakh will be spent. There will be increase. 2-3 लाख खर्च और तेरे को एमएस मिलेगी, जिसमें तेरे को 15 लाख रुपए का वो सेविंग हो जाएगा। जो बच्चा फॉरेन से इंटर्नशिप करने जाता है ग्रेजुएशन में, वो जब उसको एमएस मिलती है तो अपने लिए 15 लाख सेव करता है। Because that professor is going to give you scholarship. Imagine this. I got opportunity for internship. I explored opportunity for internship. Internship मेरे को आसानी से मिल जाएगी। क्यों? डिग्री थोड़ी देनी है उस यूनिवर्सिटी में। Let's say I want to go to National University Singapore. Finally, which university want to land up for MS? Sir, I want to go to let's say this university, Imperial College London. Let's say मिलेगा एक ट्रिक जो मैं बताने भूल गया तेरे क्वेश्चन में। I'll do that. मैं इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर को मेल डालूंगा कि मेरे को इंटर्नशिप के लिए आना है 2 मंथ, जब जितना भी है, कैन आई ज्वाइन? एंड प्रोफेसर सीज के हाँ ये हमारे लिए इनकम जनरेट कर रहा है। फॉरेन में यूनिवर्सिटीज को अब इंडिया में हो गया इनकम जनरेशन, ये इनकम जनरेट कर रहा है क्योंकि तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसको पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने तुम्हें सर्टिफिकेट भी नहीं देना है, इंटर्नशिप का देना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है यूनिवर्सिटी का। थोड़े टाइम के लिए तुम गए और वहां, अब जब तुम वहां गए तुमने 3 लाख रुपए खर्चा, जब तुमने 3 लाख खर्चा तो तुम्हें रिटर्न में क्या मिला? आपको बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेसर को इम्प्रेस किया एंड देन यू आर सेइंग गुड बाय प्रोफेसर, वंडरफुल जॉब सर, आई वुड लाइक टू डू एमएस अंडर यूनिवर्सिटी। यस श्योर एंड जो स्कॉलरशिप को मिलेगा तुम्हें वो 15 लाख सेव करेगा। फिनिश? कैन वी? ओके। एंड जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा that is gonna save 15 lakh for you. And what about MTech to PhD? पता नहीं बच्चों ने MTech वालों ने डार्ट स्कॉलरशिप का नाम सुना है कि नहीं? ऐसे बहुत से स्कॉलरशिप हैं। नहीं भी तुम इंटर्नशिप के लिए जाओ, 1 मंथ 2 मंथ के लिए जाओ, वहां प्रोफेसर को पटाओ, दैट इज अ वर्ड आई विल यूज, उसको इंप्रेस करो। वी आर टेक्नोक्रेट्स राइट, वी शुड डू दैट। और उसके लिए पीएचडी इंश्योर करके आओ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, दैट इज एग्जांपल एक्चुअली। देखो आपको जब लगे ना कि आपकी प्रॉब्लम है इस टाइम पे, आपके रिसोर्स कम है, लाइफ में रिसोर्स सबसे डायनामिक रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो बाकी सारे रिसोर्स क्रिएट कर सकता है अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर डायनामिज्म है, यू कैन क्रिएट द रिसोर्सेस। डू यू थिंक मनी की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप चलता है? मनी की वजह से सिस्टम क्रिएट होते हैं? नेवर। दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर 12 years ऑफ माय एंटरप्रेन्योरशिप।
मनी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। जिस आदमी के पास पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क करने को तैयार है, पैशन है, वो बिना पैसे के वो खत्म कर देगा पैसा, उसको कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा। सो कंस्ट्रेंट्स, जब भी तुम्हें लगता है ना कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद सोचो सॉल्यूशन क्या है। अगर तुम कंस्ट्रेंट्स तुम्हें दिख रहा है तो देन ट्यून योर माइंड टू थिंक व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन फॉर दैट। डोंट ब्लॉक योर माइंड एट द पॉइंट कि अगर हम 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाए तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन रुक जाएगा। नो, इंटरनेट है। डोंट टेक माय वर्ड्स नेगेटिव, डोंट डू दैट। ये तुम्हें लगे कि फॉरेन का अगर प्रोफेसर यहां नहीं आ पाए तो मैं शायद फॉरेन के प्रोफेसर का इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। नो, यू कैन डू दैट। सॉल्यूशन ढूंढने की स्टार्ट करो। एंड बिलीव मी, आईआईटी मंडी, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं यहां पे खड़ा हूं इसलिए बोल रहा हूं। जो लोग ये बिलीव करते हैं कि आईआईटी मंडी जो है 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे हाईवे से या दूर है और ये डिसएडवांटेज है, तुमने वो सोचना ही स्टार्ट नहीं किया। एक टर्म होती है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आईआईटी दिल्ली में पढ़े हैं हम लोग, इतनी डिस्ट्रैक्शन है भाई साहब, पढ़ाई में मन ही नहीं लग सकता। प्रोफेसर मस्ट बी लिसनिंग, डिस्ट्रैक्शंस, I mean, that kind of same environment is not there. I understand you want combination of everything in life, but जब जो कुछ चीज मिलती है आप उसी के ऊपर स्ट्रेंथ पे खेलोगे ना, वीकनेस के ऊपर तो नहीं होते रह जाओगे। मेरी हाइट कम है, so I will never get a good girlfriend. I cannot cry like that. You understand that? That I'm telling you a story of my college. I mean, there used to be a smart guy, tall guy, and that would have given me a lot of inferior complex. There was one of my friend, I was having more girlfriends than him. I don't know, what are you doing with your height and you're so smart, you're wasting your resource. In Mandi, and they come since 2013 with students from America, Massachusetts. I was asking why you are here. Mandi is not a very developed place. Why you are here from Massachusetts and you come every year 2 months? She told me something which is only peculiar, and that they are coming only in IIT Mandi, no other IIT, no other institute in India. What she answered made a sense to me, though I am from this part of India. That made a very good sense to me, that this thing is only available in Mandi. एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, लैंडस्लाइड कहां देखने, कौन सी आईटी में लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा बताओ। अब ये तो रोना स्टार्ट कर दो यार, मैं जाते थे किस दिन लैंडस्लाइड होकर मर जाऊंगा। या तुम ये सोचो कि यार लैंडस्लाइड का सॉल्यूशन वर्ल्ड में अगर चैलेंज इनटू योर अपॉर्चुनिटी, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट। सो हर जगह का ना जो स्ट्रेंथ वीकनेस होता है, और वही चैलेंज आपको वही है कि अपने वीकनेस जो आपको लग रही है उसको चैलेंज कैसे बनाना। एंटायर इंडिया इन मंथ ऑफ जून जुलाई, प्रोफेसर राहुल he coined this term to me and I'm really impressed, academic tourism. Today we went to Lake Parashar and I was thinking of academic tourism, how it can be like a person comes and stays in Lake Parashar, वहां पे ऊपर वो बना रहे हैं छोटा सा रेजिडेंस, stays in IIT Mandi and for 1 or 2 months is doing wonderful job or away from the heat and hurry and worry of the cities. Believe me, world is running for that. योगा की तुम लोग बात कर रहे हो, कौन सी आईटी में बेस्ट योगा प्रैक्टिस किया, ऐसा बता रहा हूं। ऊल के किनारे बैठ के द काइंड ऑफ साउंड, आई वाज इन दिस मैस ऑफ, एंड जो माउंटेन विंड है उसकी आवाज होती है, सी की साउंड है, सी का भी साउंड होता है, रिवर का भी साउंड होता है, विंड का भी साउंड होता है। आईटी दिल्ली में तीनों नहीं सुनने को मिलती। मैं वो नहीं करो ना यार, अपना भी करो, अपने इंस्टीट्यूट का भी करो, मेक इट वर्क फॉर यू, मेक इट लास्ट। Hi sir, my name is Ashwarya. I am studying MTech Biotechnology. I am in 2nd semester. So I did my BTech from Agriculture University in Pusa. So my project was totally dependent on plant. So I did like endophyte study and biocontrol and all, biofertilizer and all. But now in MTech, I'm wanted to do in nano devices in health applications. So for copywriting, what should I prefer? Like, should I include all I learned from BTech and MTech, or should I prefer only the thing that professor is into? Like, SOP is like what professor want in their prospective students. SOP में typical और cover. So agriculture का reputed institute में आता है पूसा institute. yes sir. तो मेरे को पता लग गया she has that background. Then that is academic. Then I want to know when you are doing presently whatever you are doing, उसमें what you are doing. Most important thing is the project. Yes sir. Presently, I am doing research in this particular thing. Yeah. Third, I want to know why you want to come to my institute or my department. Research work which I did, professor, is matching with your research, and your institute offers me the skills which presently I don't have. So specific some skill like Because a mistake maybe was done, like
you were not very clear what skills somebody asking when you join that. Yeah. वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना यार, जहां पे जाना चाहते हो मांगेगा तुमसे, that you should know. And if you don't do that, when he is going to ask you, you will say no. Yes. Skills, sit one day and identify what skills are required for that, और उनको acquire कर लो. लेकिन मतलब वो कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे कि मैंने बीटेक में माइक्रोबियल बायोटेक पे पूरा काम किया है और अभी मैं पूरा थोड़ा They will be confused if you are confused. Like I'm not confused. If you are not confused, you can make them clear. Okay. See, that is I'm not trying to stop you from speaking. I'm saying that if as a teacher, if I'm very clear in what I want to say, I can make my audience also that thing very clear. अगर clear हो, किसी भी वो सर ये तो नहीं पूछेंगे, तो तुम्हें आंसर आता है, आंसर आता है, तो बता दो. That's what I'm saying. Yeah. If you are not clear, you cannot convince them also. So entire problem boils down to, yeah. So I think we ended up. Go ahead, get back. Can I? Yeah, sorry. Go ahead. Yeah. So, sir, I don't know if you covered it in first 15 minutes. I came late by 15 minutes. Okay. So, as today's focus is on foreign admissions, so sir, can you just focus on the scholarship and the cost of living and those kind of things? You want to go for, so the moment you go there for PhD, you are a rich man from Indian perspective. Yes. Surely. And there are some countries like Scandinavian countries, Norway, Sweden, जहां पे monthly you can save 4 lakh rupees Indian monthly in PhD. Okay. मेरे को तो ये पता नहीं चला MTech वाले लोग इंडिया में जॉब्स क्यों फाइट करते रहते हैं. Every MTech guy from IIT deserves 2 lakh rupees saving if they go for PhD course. मैं ये बोल रहा हूं, सब सुन रहा है इंडिया. Yes. मैं क्लियरली बोल रहा हूं और मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है. 4 लाख रुपी पर $1200 सेव कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इंडियन रुपीज में. दैट मनी यू सेव, टैक्स नहीं है उसके ऊपर. इन द बिगिनिंग यू नीड टू हैव 1 लाख इन योर पॉकेट, एयर फेयर एंड ऑल. उसके बाद यू आर अ रिच मैन. आई एम टेलिंग यू दैट ऑनेस्टली. एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस. प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड. और एमटेक वाले बच्चा तो वैसे ही पीएचडी के लिए उसके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. Yes. और आईआईटी से अपनी स्किल जो आप एक्वायर करते हो उसको आप एक्वायर करके यू आर बेस्ट ट्रेन्ड फॉर इवन पीएचडी कोर्सेज देयर. हम बहुत साल बोलते रहे ब्रेन ड्रेन है. It means like brain drain is nothing big because the companies we work for, they are also foreign companies. Yeah, that is also MNC. Yes. So have I answered your question? Yes, sir. Sir, like, yeah, sir. You said $1,200. Is it means like you are saying kind of average? I'm saying entire world average. Like, क्योंकि आई कांट से अबाउट यूरोप एंड एवरीथिंग, लेकिन मैंने तुम्हें एवरेज बता दिया कि एवरेज तुम्हें $2500 मिलेगा. यूरोप में भी उसको कन्वर्ट करके देख लो, यूरो में, या तुम क्रोनर में कन्वर्ट करके देख लो, स्कैंडिनेवियन में तुम कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें $2500 मिलेगा, जिसमें $1200 खर्चा होगा और सेविंग तुम्हारा $1200 होगा, $1200. दैट इज द एवरेज फॉर ग्लोबल. वैसे मैं वर्ल्ड के लिए ये बोल रहा हूं जो मैंने बोला अभी. sir, and tuition fees are also included. उसका सारा निकाल के $1200 के अंदर. ट्यूशन फीस नहीं होता, पीएचडी में बहुत कम होता है. उसके निकालने के बाद जो मेरे स्टूडेंट्स बचा रहे हैं, ऑल माय इंफॉर्मेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ माय स्टूडेंट्स. कि सर मेरे को इतना बच जाता है, इतना मैं खर्चा करता हूं, और भी अर्न करते हैं, जनरेट करते हैं बच्चे रिसोर्स. Okay. So I mean, in PhD people take their families also sometime, and they are, I mean, helping with their families also. They are rearing their families also. That is, हाँ. So अब खत्म करते हैं फिर सेशन, right? Okay. You have one question, yeah. And I tell you, let me tell on air, IIT Mandi ने स्टूडेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, and this is really good. I'm really happy. Clap करो यार Joseph. This is very good. Yeah. Good. Good. Sir, my question is, like you said, IITs, जैसे IIT Mandi है, it's job oriented now. Like people are more focusing on jobs, but we should more focus on entrepreneurship. But ऐसा नहीं हो रहा है. But sir, like अगर ये ऐसा है तो how we will change this situation if this is a problem? Like देखो अगर चेंज ऐसे आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो बग, हाँ प्लीज कंप्लीट One more thing, कि अगर मुझे करना है, like मेरा सराउंडिंग ही ऐसा है, तो अगर मेरे को करना है, मेरे अंदर वो स्पार्क है, बट फिर मेरा सराउंडिंग मुझे सप्रेस तो करेगा ना. सो हाउ आई विल डील विद इट? जो अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का बग है, कीड़ा है, वो कोई मरता नहीं और वो तुम्हें और कहीं पे भी सर्वाइव नहीं करने देता. तुम एंटरप्रेन्योर बनोगे. अगर वो बग नहीं है तो तुम्हें कोई एंटरप्रेन्योर बना नहीं सकता. मेरी स्टेटमेंट ये है. लेकिन फिर आप जैसे लोग आके क्या करते हैं, आप मेरे को पूछोगे सर फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर क्यों दे रहे हो? मैं उन्हीं लोगों को बता रहा हूं जिनके अंदर वो बग है, कि तुम्हारे अंदर बग है, और अगर वो बग है तो इसको ऐसे फीड किया जाता है. तो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है कि नहीं, ये आपका डिसीजन आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड है. रिस्क ले लेते हो
मैंने एक आई डोंट नो, आई मीन आई मेड वन प्रेजेंटेशन, दिस वाज फॉर आईआईटी आई थिंक रोपड़, बट आई डोंट हैव दिस। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, उसमें लेबर पेन होता है, लेबर पेन का एक सिंपल सॉल्यूशन होता है सर्जिकल, सर्जन सर्जरी कर दो बच्चा निकल जाएगा। लेबर पेन को अवॉइड नहीं करना, एंटरप्रेन्योरशिप में लेबर पेन को अवॉइड नहीं करना, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है। लेकिन अगर तुम लेबर पेन को अवॉइड करने के लिए बोलो सर्जिकल कर दो, आई वांट टू रिलीव माय पेन, तो तुम एंटरप्रेन्योर नहीं हो। एक सांप सीढ़ी होती है लूडो की गेम, उसमें 99 पे सांप बैठा होता है, 99 पे, उसकी पूंछ 1 पे जाती है, पता नहीं हमारे टाइम पे होती थी, अब नजर कम आती है लूडो, अब 7 पे आ गई है। 99 पे अगर तुम्हें वो सांप खा जाए, अगर तुम्हें सांप खा जाए और तुम डिप्रेस हो जाओ, तो तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। बट अगर उसने सामने खा लिया, तुम हंसे यार देख बड़ा, में 2-4 जॉब्स करोगे, उसके बाद यू विल हिट दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज टू बी डन, राइट? So I think we ended up the session. It was wonderful. Now, you, yeah, please fast. Sir, I have a question. Fast, Sir, as you have mentioned in your slide that the top universities, they are now they are accepting less GRE scores. So sir, I think these exams act as a filter कि they are taking best out of best. तो सर अगर less score पे students को accept करने लगेंगे तो system में problem। GRE is only one criteria. तुम्हें पता GRE का component क्या है? English and quant. तुम्हें लगता है कि उसके बेस पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा ये अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर है, ये अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर है? GRE is all about quant and verbal, that तो you know. Yes sir, but पहले नहीं होता था ऐसा, तो कब? मैंने बताया ना, वो मैंने बताया कोविड इफेक्ट है वो। कोविड में लोग बच्चे नहीं जा रहे ना वहां पे, अभी कोविड ने ऐसा क्या चेंज कर दिया कि बच्चे जाना बंद हो गए? बट सर स्टडीज तो ऐसे ही चल रही थी ना, जैसे नहीं ऐसे नहीं चल रही थी, गए नहीं बच्चे, एडमिशन लिए 2 साल 21 और 22 में। नहीं, नॉट अबाउट द फॉरेन जो बोल रहे हो, बट एग्जाम्स का स्टैंडर्ड वो लोग नीचे क्यों ला रहे हैं? बिकॉज दे वांट मोर स्टूडेंट्स टू कम। डू यू एग्री विद मी दैट यू मे बी वंडरफुल टेक्नोक्रेट, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती? यू एग्री दैट? इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वंडरफुल टेक्नोक्रेट्स, यार इंग्लिश नहीं आती, जीआरई से डरते हैं। एंड आई नो कि तू तो एमआईटी जा सकता है, लेकिन जीआरई कैसे लिखूंगा सर, मेरे को इंग्लिश जरा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, चाइनीज ले लो, तो दे वांट गुड पीपल टू कम, तो दे वेव्ड ऑफ जीआरई। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बट सर वो एक स्टैंडर्ड होता होगा ना, जैसे आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं फिर वो बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक को इंग्लिश आता है, एक को इंग्लिश नहीं आता, लेकिन उन दोनों को फिजिक्स बहुत अच्छा आता है। बट सर वो एक लैग करेगा ना अगर कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कुछ प्रोफेशंस में लैकिंग कम्युनिकेशन डज नॉट अफेक्ट साइंटिस्ट। बट सर अगर मैं किसी चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं वही चीज किसी को समझा नहीं पा रहा, तो उस चीज का मतलब दैट इज अ साइंटिस्ट। आई एम टेलिंग यू दैट, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं तेरे को। दैट इज अ टिपिकल साइंटिस्ट। कि मैंने रिसर्च में फंडू की, किसको समझानी मैंने वो रिसर्च, ये बता। मैं टीचर थोड़ा हूं। दैट इज द रीजन आई लेफ्ट डीआरडीओ। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ आई एम टिपिकल टीचर। तू मेरे से कुछ मर्जी पूछ ले, मैं तेरे को जस्टिफाई कर दूंगा। साइंटिस्ट का काम वो नहीं होता, लैब में वंडरफुल रिसर्च करनी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता। जिनको एक्सप्लेन करना उनको समझ आता है, वो भी साइंटिस्ट ही होते हैं। सब समझ आता है, हाँ वंडरफुल वर्क, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई डोंट थिंक क्वालिटी उससे नीचे गिरेगी, बट हाँ बेटर, मोर तो बेटर, ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ जी, योर क्वेश्चन। हाय सर, आई एम वर्षिता, बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो सर मुझे भी मास्टर्स बाहर से करनी है, तो उसकी क्या क्या बेटा जोर से बोलेंगे आप? मुझे भी बाहर से मास्टर्स करनी है सर फिजिक्स में। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? लव फिजिक्स। वो तो है। मैं हंस रहे तुम लोग यार, मैं स्ट्रेट बता रहा हूं। डेवलप द लव फॉर फिजिक्स, नंबर 1। जब तुम बहुत अच्छा काम करोगे लैब के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो तुम उसको रिफ्लेक्ट करो, लिंक्डइन पे प्रोफेसर पकड़ो, उसके सारी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स हैं। जीआरई हो गया, अप्लाई करना हो गया, वो सारी सेकेंडरी है, वो भी रिक्वायरमेंट आ जाएगा। लेकिन इफ यू डिड लव फिजिक्स मींस यू स्टार्ट डूइंग वंडरफुल वर्क। एंड आई टेल यू वन थिंग, प्रोफेसर विल गेट टू नो दिस गर्ल इज रियली गुड इन फिजिक्स, एंड यू विल बी गुड इन फिजिक्स ओनली इफ यू लव फिजिक्स। आपने बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट किया, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा किया, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में देखा लोग क्या काम कर रहे हैं, फिर आपने उनसे कनेक्ट होना स्टार्ट किया, फिर आपने जीआरई में मिलता वेव ऑफ हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सर उसमें सीजीपीए मैटर्स करती है क्या? करती है टू सम एक्सटेंट, बट इफ यू से दैट माय सीजीपीए 6.5 एंड आई कैन नॉट गेट वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आई बेग टू डिफर, इट इज नॉट दैट। सीजीपीए मैटर करती है, कवर लेटर मैटर करता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैटर करता है, जीआरई स्कोर मैटर करता है, आपका रिसर्च वर्क मैटर करता है, आपका इंस्टीट्यूट मैटर करता है। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, इफ यू डू नॉट हैव वन इट मे बी कंप्रोमाइज्ड एट द अदर, बट बिकॉज इट इज प्लेथोरा एंड आई टेल यू द लास्ट पैशन, अगर if you are good in physics and if you are passionate to go to top university, someday you will reach, that is for sure.
Just focus on that part. Okay, so now we, I think we already asked. Yeah, जल्दी से पूछो. Yes, yes. पीएचडी की बात कर रहे हैं. ओके, आपका ये लास्ट स्टेटमेंट गलत कि स्कॉलरशिप नहीं मिलता. बिना स्कॉलरशिप नहीं, ये आपकी इंफॉर्मेशन कहां से है? हाँ, तुमने स्टूडेंट से लिया इंफॉर्मेशन, वही गलती है बस. ये बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी में जाओ और देखो, बिना स्कॉलरशिप के पीएचडी नहीं होता. पीएचडी मिलता है, एडमिशन मुश्किल से मिलता. नहीं, अगेन यू आर रॉन्ग एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आप कंफर्म करो, बिना अच्छी स्कॉलरशिप के पीएचडी होती नहीं है. जापान बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देता है. ये लास्ट स्टेटमेंट गलत थी. गो टू जापान एंड यू विल गेट स्कॉलरशिप. टोफल कई बार मांगता है, वो इंग्लिश स्पीकिंग हो. वर्क, सीजीपीए, कॉलेज तुम्हारा अच्छा है, कवर लेटर अच्छा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये चीज मैटर करेगी. ये चीज मैटर करेगी. और जीआरई की भी ट्राई करना. मैंने बोला कि प्रेजेंटली सिचुएशन है, लेकिन जीआरई भी लिखो, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी. अच्छा जीआरई, अच्छा सीजीपीए, अच्छा कॉलेज, अच्छा रिसर्च वर्क, अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अच्छा कवर लेटर, ये हमें चाहिए. अच्छा सीजीपीए. अगर इनमें से अच्छा कुछ भी नहीं है तो क्या नहीं मिलेगा? फ्री मिलेगा. दैट इज ब्यूटी ऑफ लाइफ. चलो एंड करते हैं. आई वुड लाइक कवर. हाँ, more update है वहाँ से मिलते हैं. okay, so I think this entire detail you can take from our channel, so I'm promoting my channel also, you can take that. Thank you.